Today's topic is classification of solids. So solids are classified into two types, crystalline and amorphous. So सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? क्रिस्टलाइन, उसके बाद amorphous. So characteristics of crystalline solid. For example, common salt. An example of crystalline solid is common salt. जो घरों में आप नमक यूज करते हो, सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl. सो दिस इज द पैकिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है स्टूडेंट, साइज ऑफ सोडियम आयन इज स्मॉलर देन क्लोराइड आयन. So कह रहा है हाउ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर अरेंज इन द क्रिस्टल लैटिस इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो दिस इज द पैकिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन in the form of crystal. So there is a three-dimensional figure. So order is regular, uniform and homogeneous. So packing of crystalline solid is three dimension, regular packing of ions, uniform and homogeneous packing of sodium ions and chloride ions. So such homogeneous uniform arrangement is observed in crystalline solid. So packing of crystalline solid is homogeneous, uniform and homogeneous regular packing. So crystalline solids are homogeneous solids, and this is the 3D image of sodium chloride, and this is the basic representation of solids. So the general representation of solids, for example, there is a atoms, two types of atoms, A and B. They are arranged in a regular fashion in case of crystalline solid. So it exhibits long range order. अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या ऑर्डर का वो अभी देखते हैं. सो पहली क्या थी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर होमोजीनियस सॉलिड्स. सेकंड क्या आ गया? इट एग्जिबिट्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर. So what is an order? Order implies some sort of repetition in the structure. जो atoms हैं arrange हुए हैं solids में, they have some sort of repetition and somewhat like periodicity. एक fixed period के बाद आपके atoms क्या हो रहे हैं? They are packed in a regular homogeneous manner. So why long range? लॉन्ग रेंज इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी. इनकी जो कॉन्टिन्यूटी है एटम्स के पैकिंग होने की, वो क्या स्टूडेंट? सो इनकी जो पैकिंग है स्टूडेंट, वो क्या है? कॉन्टिन्यूस पैकिंग. तो उसका मतलब क्या है? उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग रेंज. सो लॉन्ग रेंज का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूटी. सो पैकिंग ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर continuous. So that's why it is called a long range. And order means there is a fixed periodicity and continuity. For example देखिए, A के बाद कौन सा आ रहा है? B. फिर A के बाद कौन सा आ रहा है? B. इसका मतलब इनकी जो continuity है, जो order है, वो क्या है? एक fixed order है. ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं कि यहां पे A आ गया तो यहां भी A आ जाएगा, यहां B आ गया, यहां B आ गया, A आ गया. No, they have a fixed order. So that's why, and they are continuous. So that's why it is a long range order. So for example, this is the 3D view of solid. So they have long range because they are continuous and they are repetitively. ये देखिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं. रिपीट का मतलब क्या आ गया? ऑर्डर. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्सिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर.
So the constituent particles are arranged in definite repeating pattern. This is called a long range order. अगर आपके पार्टिकल्स, सॉलिड्स के पार्टिकल्स कैसे अरेंज हो रहे हैं? इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग रेंज ऑर्डर. हाउ आर दी सॉलिड्स बिल्ट? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए सॉलिड, दिस इज a 3D व्यू ऑफ ए solid. So these are the atoms at the corners of a cube. For example, this is another. So क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आपके जो एटम्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? आर अरेंज्ड इन ए, कौन से? डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में. ठीक है स्टूडेंट. सो जो ये सिंगल आपका यूनिट था स्टूडेंट, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल. इट मींस जो आपका ये क्रिस्टल बना है पूरा का पूरा, वो किससे बना है? यूनिट सेल से. किससे बना है? सिंगल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड ए यूनिट सेल. ठीक है स्टूडेंट. एंड दिस वन इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड. एटम्स आर अरेंज्ड इन definite repeating pattern. So this is the smallest unit of a crystal called unit cell. So solids, कौन से? crystalline solids are aggregates of small tiny crystals. क्या बोल दिया उसको? unit cell. ठीक है स्टूडेंट. सो सारे यूनिट सेल मिलकर क्या बनाएंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, क्या आगे स्टूडेंट? ऑप्शन होमोजीनियस एंड लॉन्ग रेंज. ठीक है स्टूडेंट. NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो ऑर्डर क्या क्या मतलब है स्टूडेंट? repetition and fixed period. ठीक है स्टूडेंट. सो एटम्स आर repetitivity and are arranged with some period. So that's why उसका क्या मतलब है आपका? order. So crystalline solids are long range order. The basic unit of crystalline solid is, अभी हमने किया डिस्कस स्टूडेंट, क्या था बेसिक यूनिट? unit cell. So basic unit of a crystalline solid is called a unit cell. So student, next term next lecture में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर